Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 11th lecture of this series of CPC. In this lecture we would start with section 18. तो देखो सेक्शन 18 में बेसिकली जब आपकी प्रॉपर्टी सूट प्रॉपर्टी ये सर्टेन ही नहीं है कि कहाँ पर है, यू आर नॉट सर्टेन। जब 17 में तो आप सर्टेन थे कि कहाँ पर है, चाहे जो दो ज्यूरिडिक्शन में हो तब भी सर्टेन थे आप। अब इन 18 it comes to situation where he has filed a suit against B. He has filed a suit against B, but he is not certain कि जो मेरी सूट की प्रॉपर्टी है वो किस कोर्ट के जुरिडिक्शन में है। He is not sure. So वो कहाँ फाइल करेगा? He will file in any court. And if the court is also uncertain about the property's location, then the court will record that in this regard, the court is uncertain about the jurisdiction because this is not certain as to whether the suit property is situated here or not. इसको अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बट पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो आप। Where it is alleged to be uncertain within the local limits of jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situate, any one of those courts may, if satisfied that there is ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property. And its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction. फिर से देखो आप, where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situate. मतलब प्लेंटिफ को ये सर्टेन नहीं है कि किस कोर्ट के जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, लेकिन उसको ये पता है कि ये दो तीन कोर्ट्स हैं जिसमें प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ही नोज कि इन्हीं दो तीन कोर्ट में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, बट एग्जैक्टली किस कोर्ट में ही इज नॉट श्योर, एंड इट इज अलेज्ड टू बी अनसर्टेन वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. Any one of those courts may, if satisfied that there is ground for the alleged uncertainty. अब जिस समय आप सूट फाइल करोगे, the court may find the property, the court may find that the property may be situated, the property may be situated or may not be situated. तो उसके लिए फर्दर ट्रायल करना पड़ेगा, तो ट्रायल के बाद पता पड़ेगा, एविडेंसेस पर पता चलेगा कि प्रॉपर्टी है कि नहीं। लेकिन अभी जब आप ज्यूरिडिक्शन लोगे तो उस समय तो आप श्योर नहीं हो, और अभी आपने एविडेंसेस लिए नहीं है, then how will you come to know that as to whether the property is situated there or not? So the court may record a finding in that regard that for so and so reason it is uncertain as to whether the suit property is situated in jurisdiction or not, and after that the court may continue with the trial. अब मान लो ट्रायल के बीच में कोर्ट को एक्चुअली पता चल गया कि प्रॉपर्टी इज नॉट सिचुएटेड देयर, तो क्या कोर्ट ट्रायल रोक कर सूट को ट्रांसफर करेगा, रिटर्न करेगा प्लेंट को, या फिर ट्रायल कंटिन्यू कर जाएगा? सो दे आर सेइंग कि ट्रायल कंटिन्यू करेगा, दे विल पास द डिक्री एंड द डिक्री विल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ द सूट प्रॉपर्टी वाज सिचुएटेड इन द jurisdiction of that court. So that is what they are saying in the first clause. Provided the court has recorded that it is uncertain for so and so grounds as to whether the property is situated here or not. आप एक बार फिर से पढ़ो. Where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situate, any one of those courts may, if satisfied that there is ground for alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit. अब ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट satisfied है that there is ground for uncertainty, it may record the statement to that effect. तो इस बारे में एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा that it is uncertain as to whether the suit property is there or not,
and as to whether this court is having jurisdiction or not for so and so reasons, and then it will go ahead with the trial and dispose of any suit relating to that property and and its degree in the suit shall have the same effect as if the property was situated within the local limits of its jurisdiction. अब एक्चुअली प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी नहीं उसके jurisdiction में, फिर भी उसने डिक्री पास कर दिया, तो माना जाएगा as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction, and the degree will have the same effect which it could have had if the property were actually situated. मतलब डिक्री के इफेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, decree will be valid and it will be effective. Have the same effect as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction, provided that the suit is one with respect to which the court is competent as regards the nature and value of the suit to exercise jurisdiction. अब यहाँ भी वही बात आ गई कि आप उस कोर्ट के पास पूरी प्रॉपर्टी का पेक्यूनरी jurisdiction रखेंगे. So is that fine? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. मान लो देयर इज अ फैमिली एफ, एफ एस एंड एफ एस वन. अब इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली में भी इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है. मान लो ये अलवर है, तो अलवर में बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनके पास. एंड दिस इज जयपुर, तो इन जयपुर ऑल्सो दे हैव गॉट सेवरल प्रॉपर्टी. अब एफ एस फाइल्स अ पार्टीशन सूट अगेंस्ट एफ and FS1, a partition suit. Now this family has got one house here, one house here and one house here. वैसे तो और भी प्रॉपर्टी हैं, बट मकान की बात कर रहा हूँ. They have got 3 houses, one at Jaipur, one at Alwar and one at Delhi. अब पार्टीशन में तो पूरी प्रॉपर्टी पार्टीशन होगी. In the partition, the entire joint property will be partitioned, so the suit can be filed in either of these places. तो इनमें से कहीं भी कर लो, लेकिन पूरे सूट की वैल्यूएशन, पूरी प्रॉपर्टियों की वैल्यूएशन के अनुसार यू विल सी द पेक्यूनरी jurisdiction ऑफ द कोर्ट. ठीक है, दोबारा देखते हैं. एफ, एफ एस एंड एफ एस वन. एक पिता है, 2 बेटे हैं. अब एफ एस ने पार्टीशन के लिए सूट कर दिया एफ और एफ एस वन पर, अपने पिताजी और उसके भाई पर, अपने पिताजी और अपने भाई पर पार्टीशन के लिए सूट कर दिया उसने. अब इस फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी इज पार्टली सिचुएटेड एट दिल्ली, partly at Alwar and partly at Jaipur. They have got 3 houses in joint family. They have 3 houses, one at Delhi, one at Alwar and one at Jaipur. अब ऐसा हो सकता है, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी अलग अलग जगहों पर हो सकती है. अब ही वांट्स द पार्टीशन ऑफ ऑल दीज 3 प्रॉपर्टी, तो अब वो सूट कहीं पे भी कर सकता है. either of these he can file the suit. लेकिन मान लो वो दिल्ली में सूट करता है, बट एट द टाइम ऑफ द सूट ही इज नॉट सर्टेन वेदर दिस दिल्ली वाला हाउस इज बिलोंग टू जॉइंट फैमिली और इट बिलोंग्स टू फादर एज ऑफ हिज सेपरेट प्रॉपर्टी. हो सकता है फादर ने अपनी पर्सनल इनकम से वो मकान खरीदा हो और एफ एस अलेज कर रहा है कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, और फादर ने जो रिटन स्टेटमेंट डाला है उसमें लिखा है उसने कि दिल्ली वाली प्रॉपर्टी तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है. ये हो सकता है. अब कोई एंसेस्ट्रल हाउस है, एग्रीकल्चर लैंड है, एक्सेट्रा, दे आर द जॉइंट, बट फादर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो उसने खुद खरीदी है, दैट इज नॉट जॉइंट. Now here father said that this is my own property and is not joint property in the written statement he told, so the jurisdiction of the Delhi court will not lie. अब इस स्टेज पर ट्रायल तो हुआ नहीं है अभी, और ये तो ट्रायल में देखा जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है. तो इस स्टेज पर द मैनर इन विच द प्रॉपर्टी हैज बीन देयर, द मैनर इन विच person is going to use and stay there, that family is to stay there, so that is suggesting that it may be joint or it may be separate. A court will record the facts that it is uncertain whether the property situated at Delhi is joint or separate, and after recording that statement the court will continue with that trial.
अब ट्रायल में कोर्ट को आगे जाकर पता चला कि दैट प्रॉपर्टी इज द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड दैट इज नॉट जॉइंट एंड देयरफॉर practically it does not have jurisdiction। तो क्या कोर्ट को उस स्टेज पर जब उसको पता चला ट्रायल छोड़ देना पड़ेगा और प्लेंट रिटर्न करके बोलना पड़ेगा कि जाओ अपने किसी ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में फाइल करो, और या फिर कैन द कोर्ट स्टिल कंटिन्यू विद द ट्रायल एंड पास द जजमेंट? द आंसर इज द कोर्ट कैन स्टिल कंटिन्यू द ट्रायल एंड दैट इज व्हाई द क्लाउज 1 हैज बीन मेंशन्ड कि अगर आपने शुरू में रीजंस रिकॉर्ड कर लिए फॉर द अनसर्टेनिटी ऑफ द ज्यूरिडिक्शंस और डिक्री पास कर दिया ट्रायल करके, बेशक वो प्रॉपर्टी आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं सिचुएटेड थी मतलब क्या था तो ज्यूरिडिक्शन में, लेकिन वो सूट प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट द जॉइंट प्रॉपर्टी, तो उस केस में भी आपकी डिग्री वैलिड होगी एंड डिग्री विल बी इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड। तो ये समझ में आया एग्जाम्पल। नाउ कम टू सेकंड क्लाउज where a statement has not been recorded under subsection 1 and an objection is taken before an appellate or revisional court has a decree or order in suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situate, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless in its opinion there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto, and there has been a consequent failure of justice। इसको एक और बार पढ़ो। Where a statement has not been recorded under subsection 1 and an objection is taken before an appellate or revisional court that a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situate, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless in its opinion there was at the time of institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect to and there has been a consequent failure of justice। Now you see what they are saying is, समझिएगा बड़े ध्यान से, there is a court which has passed a decree in respect to a immovable property। एक कोर्ट ने किसी immovable property के कॉन्टेक्स्ट में एक डिक्री पास किया, लेकिन पाया गया कि उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ही नहीं। The property with respect to which the decree has been passed, it is found that that property is not situated in the jurisdiction of that court। अब the party जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई that goes into appeal or maybe appeal or revision to that, and that will be in high court। For revision you will go high court। Now you go in a appeal, अब appellate court के पास this appealing party raises an objection that the trial court did not have jurisdiction because the property is not situated in his jurisdiction। When it passes a judgment and moreover there is no recorded in 18 clause 1, the record which is required by 18 clause 1 is not found। 18 clause 1 क्या कहता है कि uncertainty of jurisdiction है, तो आप उसका रिकॉर्ड लिखो कि वो अनसर्टेनिटी है और क्यों अनसर्टेनिटी है आप लिखो उसको और उसको ट्राई कर सकते हो आप। अब ट्रायल कोर्ट ने बिना प्रॉपर्टी के सिचुएटेड होने पर ट्रायल किया और ना ही कोई रिकॉर्ड लिखा दैट देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ ज्यूरिडिक्शन। अब उस केस में विल द अपलेट कोर्ट सेट असाइड द डिक्री पर से बिकॉज देयर वाज नो रिकॉर्ड ऑफ द अनसर्टेनिटी, और विल द अपलेट कोर्ट एग्जामिन समथिंग। अब the appellate court will revert back to the stage where the suit was filed in the trial court and it will examine as to whether there was any uncertainty regarding the situation of the property in that jurisdiction
and if it is found that there was uncertainty, then the mere fact that the trial court did not record it will not vitiate the proceeding and the decree will be valid. सुनिएगा ध्यान से. If it finds that there was uncertainty regarding the situation of the property, but the court has simply committed an error that it does not have recorded the uncertainty. तो सिर्फ इस वजह से कि अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड नहीं किया गया लेकिन एक्चुअली अनसर्टेन था, the appellate court will not set aside the decree. But if the appellate court finds that there was no uncertainty, at the time of filing the suit, कोई uncertainty का ground नहीं था, and it also finds that because of the trial done by that court, the appellant had suffered failure of justice. अगर ये दो grounds prove हो जाएं, then the decree can be set aside. वही लिखा है ना इसमें लास्ट में, देखो, where a statement has not been recorded under subsection 1. मतलब ट्रायल कोर्ट ने ये स्टेटमेंट 18(1) वाला रिकॉर्ड नहीं किया. Has not been recorded under subsection 1 and an objection is taken before an appellate or revisional court that a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situate. मतलब उस कोर्ट के jurisdiction में प्रॉपर्टी नहीं था, फिर भी उसने डिक्री पास कर दिया. Of the appellate or revisional court shall not allow the objection unless its opinion. Now, allow the objection means what? Will not set aside the decree unless in its opinion there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty. मतलब सूट फाइल करते समय uncertainty का कोई ग्राउंड नहीं था as to the court having jurisdiction with respect thereto, and there has been a consequent failure of justice. They are saying and there has been a consequent failure of justice. तो एक छोटा सा पॉइंट है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं थी और फिर भी उसने डिक्री पास की और उस कोर्ट ने कोई ग्राउंड्स रिकॉर्ड नहीं किया कोई अनसर्टेनिटी का as if it was required in 18 clause 1. अब the party against whom the decree was passed goes in appeal against the decree and raises the objection in the appellate court or revisional court that the court did not have the jurisdiction because the property was not situated there, and still the court has passed the decree. What shall the appellate court do? The appellate court will examine whether there was, पहले तो एग्जामिन करेगा कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड था कि नहीं. Now obviously we are presuming that the property situated नहीं था. तब कोर्ट देखेगा जिस समय सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, प्लेंट इंस्टीट्यूट हुआ था, क्या अनसर्टेनिटी था जुरिडिक्शन में. और अगर कोर्ट ने पाया कि अनसर्टेनिटी था तब तक कोई एक्शन नहीं लेगा कोर्ट. लेट द डिक्री बी फाइनल. दूसरे ग्राउंड पर डिफीट हो जाए डिक्री पर, इस ग्राउंड पर नहीं होगा. लेकिन अगर कोर्ट ने पाया कि अनसर्टेनिटी का कोई ग्राउंड नहीं था, मतलब ट्रायल कोर्ट ने गलत ज्यूरिडिक्शन दे दिया. अनसर्टेनिटी का कोई ग्राउंड नहीं था और ट्रायल कोर्ट ने जो ट्रायल किया, ट्रायल कोर्ट के पास जो ट्रायल हुआ उसकी वजह से अपलेंट जो है उसके साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ. अपलेंट के साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ. इट विल नॉट हैव लीड इट्स एविडेंसेस प्रॉपरली. देन इन दैट केस the appellate court will set aside the decree. Now let's read this section once again. First read first clause, where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situate. Any one of those courts may, if satisfied that there is ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property.
and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction. So basically, at the time when the suit is filed, at the time of the filing of the suit, ultimately the matter goes to the court. Ultimately, when the court conducts the hearing, matter goes to the court. Then it is found that there is uncertainty regarding the jurisdiction of the court. Means it is uncertain whether the suit property is situated in the jurisdiction of the court or not. Then the court may record the grounds of uncertainty, and after recording the grounds for uncertainty, the court may conduct the trial, and finally the decree may be passed. And this decree will be a valid decree and an executable decree even if the suit property was found not to be situated in the jurisdiction of the court. So it mandates the court has made a record that there is an uncertainty for so and so reason as to whether the suit property is situated in the jurisdiction of the court. अब आप इसके बारे में लिख लीजिए पहले. Right? Section 18 refers to the cases wherein there is an uncertainty regarding the jurisdiction of court on the ground of an uncertainty as to whether the suit property is situated in such jurisdiction or not. In such a case, the court may record at the commencement of the proceedings such grounds of uncertainty and proceed for the trial. Full stop. Another sentence. Even if the suit property was not found in such jurisdiction, the decree will be valid and executable. So this section 18 clause 1 relates to the cases where uncertainty was there and the court has actually recorded the grounds of uncertainty. Now 18 clause 2 relates to the cases where the court has not recorded such uncertainty. अगर रिकॉर्ड कर लिया तो 18(1) और रिकॉर्ड नहीं किया तो 18 clause 2. And proviso you understand. Proviso is saying, provided that the suit is one with respect to which the court is competent as regards the nature and value of the suit to exercise jurisdiction. So it means suit property कई सारी जगह पर फैली हुई होगी, तो पूरी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन होगा, accordingly the court will take the pecuniary jurisdiction. Then there is second clause, बट ये प्रोवाइजो भी आप ऐड कर लेना क्लाउज 1 में जो अभी लिखवाया था, तो उसमें ऐड कर लेना दिस ऑल्सो, बिकॉज इन मेंस दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नाउ सी क्लाउज 2, where a statement has not been recorded. Where a statement has not been recorded under subsection 1 and an objection is taken before an appellate or revisional court that a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situate, means the objection in appeal and revision is that the trial court does not have jurisdiction because the property was not situated in that jurisdiction, because the property is not situated in that court's jurisdiction. So that is the objection raised, क्योंकि ultimately trial court के jurisdiction में the suit property was not found till the decree has been passed and there was no statement recorded regarding uncertainty. Then further they are saying the court having jurisdiction where the property is situate, the appellate or revisional court shall not allow the objection. Shall not allow the objection means what? Shall not set aside the decree unless in its opinion there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty. Means what? Commencement of suit के समय अगर grounds for uncertainty था तो डिग्री को सेट असाइड नहीं किया जाएगा, बेशक ट्रायल कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया. लेकिन अगर कोर्ट ने पाया कि commencement of trial के समय there was no ground of uncertainty and because of the lack of jurisdiction the justice fails against the party concerned,
then the court will set aside the decree. Read that part again. The appellate or revisional court shall not allow the objection unless, in its opinion, there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto, and there has been a consequent failure of justice. तो दो सिचुएशन हो सकती हैं. मान लो कोर्ट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, रीजंस फॉर अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड नहीं किया, and the suit property was not found in the jurisdiction of the court, and the decree passed. The two situations can be there. The appellate or revisional court will examine that at the time of the institution of the suit there was an uncertainty or not, and if it is found, दो चीजें हो सकती हैं. There was no uncertainty, and due to the lack of jurisdiction there is a failure of justice against the party concerned. So there the decree will be set aside. But if the court finds that there was actually a ground for uncertainty, and the only thing they had been that the trial court that does not recorded the ground, but there was a ground for uncertainty, वहाँ पर degree will not be set aside. वहाँ पर degree will not be set aside. इसको लिख लीजिए आप. Right. The second clause of section 18 refers to the cases where the property was not situated in the jurisdiction of trial court and there was no ground of uncertainty recorded by the trial court. In such a case, there may be two situations. Number one, the appellate or revisional court finds that at the institution of suit there was actually a ground for uncertainty. In such a case, the only error was that the ground was not recorded, but that in itself means what? Not recording of the grounds. But that in itself will not vitiate the proceedings. Rather, the decree will be final and will not be set aside on that ground. अब किसी और ग्राउंड पर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन लैक ऑफ जुरिडिक्शन के ग्राउंड पर विसिएट नहीं होगा. Will be final and will not be set aside on that ground. That is the first point. Now the second point. Right? The appellate or revisional court finds that there was no ground for uncertainty at the time of the institution of the suit. Full stop. In such a case, the court will further examine as to whether, due to lack of jurisdiction, there was failure of justice against the party concerned. If yes, then the decree will be set aside. There was a failure of justice against the party concerned. If yes, then the decree will be set aside. A failure of justice means what? Failure of justice means the aggrieved party was not able to produce evidences. अब जैसे कोर्ट का jurisdiction नहीं है, आपके पास witnesses हैं, वहाँ पर witnesses appear नहीं हो पाए. The witnesses did not cooperate to go there, and so forth. आप evidences produce नहीं कर पाए, आप proper defense नहीं ले पाए because of the lack of jurisdiction. So that is the case of failure of justice. So that's it for this section. Now up to now what we have seen, section 20, that is a general provision. Anything which is not falling under section 16 or 19, that will fall here. अब उसमें खास करके मल्टीपल डिफेंडेंट वाले केसेस और एक्सप्लेनेशन वाले क्लॉज, कॉर्पोरेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा. Then 16, various kinds of suits, that is claiming of the immovable property, and one is limited to movable also, things attached with. Then 16 के साथ we have relate 17, 18. So 16 के साथ you had seen if the property is situated in different jurisdictions, then what? We will file the suit in any of those jurisdictions. लेकिन 17 में certainty है, तो यहाँ पर certainty है कि property इन jurisdictions में है,
ये प्रॉपर्टी एक jurisdiction में नहीं है, it is scattered. So you can file the suit in any of those jurisdictions, and the valuation of the property is the valuation of the entire suit property, and accordingly you will go to the concerned pecuniary jurisdiction court. You will go to that court which have that pecuniary jurisdiction. So यहाँ पर you are certain that the suit property is situated in different jurisdiction. Now 18 is talking about a different situation. It is not certain that the property situated in a particular jurisdiction. अब उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जो पार्टीशन सूट से रिलेटेड, कि आपको पता है कि मेरे फादर की इस शहर में एक प्रॉपर्टी है, तो आपको लगता है कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्चुअली में वो जॉइंट प्रॉपर्टी है नहीं, वो आपके फादर की सेपरेट प्रॉपर्टी है. Now you are not certain whether the property belongs to your father is a separate property or it is a joint property. तो इस वजह से अनसर्टेनिटी है. प्रॉपर्टी तो है बट वेदर इट इज अ सूट प्रॉपर्टी और नॉट, दैट इज अनसर्टेन. सो ऑन दैट द कोर्ट कैन ऑलवेज टेक jurisdiction to try the suit. Ultimately it found that property concerned in that jurisdiction was not the property of the joint family, it was the property of the father, separate property. तो obviously suit property तो situated तो है ही नहीं, there is no joint property situated. Still the court can continue with the trial. So 18 is basically about uncertainty of the jurisdiction, and if there is uncertainty, the court can record the reasons and go ahead with the trial. Even if the suit property is not found in that jurisdiction, the decree will be final and executed. तो उसी में second clause में if the court has not recorded the jurisdiction, the court has not recorded the reason for uncertain jurisdiction. If the court has not recorded the reason, so the appellate and the revisional court first examine as to whether there was an uncertainty at the time of commencement of the suit regarding the suit property. And if it finds that yes, there was, if the only effect was that there was no recording on that, if not recording on that uncertainty itself not vitiate the proceeding, that was not a material effect, that is not a material defect, and therefore the degree will be final. Final in the sense किसी और ग्राउंड पर डिग्री को सेट असाइड कर सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर डिग्री सेट असाइड नहीं होगी. देन यू ऑल्सो हैव, सपोज द कोर्ट फाइंड्स, द appellate और द रिविजनल कोर्ट फाइंड्स कि सूट प्रॉपर्टी के लिए अनसर्टेनिटी नहीं थी, देयर वाज नो अनसर्टेनिटी एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट. तो अनसर्टेनिटी नहीं थी तो उस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन नहीं देना चाहिए था, तो उस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन नहीं लेना चाहिए था. If I am uncertain, then I take the jurisdiction. But if I am if I am certain कि मेरे पास सूट प्रॉपर्टी नहीं है, if I am certain that कि मेरे पास सूट प्रॉपर्टी नहीं है, then why should I take the jurisdiction? लेकिन if I am uncertain कि मेरे पास प्रॉपर्टी है कि नहीं, तब I can take the jurisdiction under that confusion. But if I have the certainty, I am certain that I do not have the suit property under my jurisdiction, then I should not have taken the jurisdiction. लेकिन सिर्फ अनसर्टेनिटी या जुरिडिक्शन ना होना अपने आप में डिग्री को सेट असाइड नहीं कर पाएगा. द मेन एग्जामिनेशन इज एज टू वेदर बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ जुरिडिक्शन देयर वाज अ फेलियर ऑफ जस्टिस और नॉट. तो सिर्फ इस वजह से कि अनसर्टेनिटी नहीं था, डिग्री सेट असाइड नहीं होगा. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द डिग्री विल बी सेट असाइड ओनली व्हेन if you find that due to that lack of jurisdiction failure of justice had taken place. तो ये आपको और आगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो कोर्ट के पास 3 तरह के जुरिडिक्शन होते हैं. एक तो टेरिटोरियल होगा, एक पेक्यूनरी होगा और एक सब्जेक्ट मैटर होगा. फॉर द टाइम बीइंग यू अंडरस्टैंड that if the subject matter jurisdiction is not there, then in that case the degree will be void per se. अगर subject matter jurisdiction नहीं है, अब suppose you are in a insolvency court और आपने एक matrimonial dispute decide कर दिया.
If you do not have the jurisdiction upon the matrimonial dispute, and therefore the subject matter jurisdiction was not there, the degree is void. तो इस पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे अभी. This point also we would discuss in this class or maybe next class. लेकिन these two jurisdiction you see, territorial and pecuniary, they are considered to be as not as strong a defect because these are administrative things. कि किस कोर्ट के jurisdiction में प्रॉपर्टी का ट्रायल होगा उस कोर्ट में, these are called administrative things. और इसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो डिग्री इज नॉट कंसिडर्ड टू बी void unless there is a failure of justice. When you read section 21, there you will find this, which I discuss later on. तो मीन्स टेरिटोरियल अगर और पेक्यूलियर ज्यूरिडिक्शन अगर ना हो तो सिर्फ लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन विल नॉट विसिएट द प्रोसीडिंग. सिर्फ लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन विल नॉट गोइंग टू विसिएट द प्रोसीडिंग. द डिग्री विल नॉट बी void. लेकिन अगर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन नहीं है देन द डिग्री विल बी void. तो अभी इसको मैं टेम्परेरी फॉर्म में समझा दूंगा, डिटेल तो बाद में आएगा. अब हमारे इस एग्जाम्पल में जो अभी हमने पढ़ा 18.2 में व्हाट वाज द सिचुएशन? द ट्रायल कोर्ट डज नॉट हैव द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन बिकॉज द सूट प्रॉपर्टी एक्चुअली वाज नॉट सिचुएटेड इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. The trial court does not have the territorial jurisdiction actually because the suit property was not situated there. Fine. अब the trial court does not have what? Not subject matter. That is a territorial jurisdiction. A mere lack of territorial jurisdiction will not vitiate the proceedings. That policy is to be found in section 21 also. If the territorial jurisdiction was not there, तो सिर्फ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का ना होना अपने आप में डिग्री को सेट असाइड नहीं करवाएगा. इन ऑर्डर टू हैव द डिग्री सेट असाइड एज पर द पॉलिसी गिवन अंडर सेक्शन 21, देयर हैज टू बी अ कॉन्सिक्वेंस फेलियर ऑफ जस्टिस एज वेल. एंड दैट इज व्हाई इन 18 clause 2 they are writing that if there was no uncertainty, अगर अनसर्टेनिटी था तब तो ठीक है, दैट इज फाइन, द डिग्री इज फाइनल. लेकिन अनसर्टेनिटी अगर नहीं था, द कोर्ट नो दैट आई डू नॉट हैव द ज्यूरिडिक्शन, स्टिल द कोर्ट टुक अप द ट्रायल. कोर्ट नो दैट आई डू नॉट हैव द ज्यूरिडिक्शन, स्टिल द कोर्ट टुक अप द ट्रायल बिकॉज देयर वाज नो अनसर्टेनिटी. द कोर्ट नो बिकॉज द कोर्ट नो दैट देयर इज नो ज्यूरिडिक्शन बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज नॉट सिचुएटेड इन इट्स ज्यूरिडिक्शन. स्टिल द कोर्ट टुक अप द ट्रायल. स्टिल द डिग्री ऑफ द court will not be void because it is a lack of territorial jurisdiction. Now, in order to be degree be void or set aside, there has to be a further evidence that there is a failure of justice. तो ये जो पार्ट लिखा है इन्होंने, that is quite in keeping with the policy declared under the section 21. तो इस पे लिख लो एक पॉइंट आप as of here. Section 21 declares the policy that a mere lack of territorial jurisdiction in itself will not have the degree set aside. Rather, there has to be a proof of failure of justice. वैसे तो सेक्शन 21 में और भी कुछ है, लेकिन फॉर एज ऑफ नाउ ये दो पॉइंट सिर्फ मैंने अभी उठाए. वैसे तो सेक्शन 21 में ये भी है, यू हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन एज सून एज पॉसिबल, बट दैट पॉइंट आई एम नॉट डूइंग हियर, दैट वी वुड डिस्कस व्हेन कम टू 21. अब आगे लिखो. ऑन द सेम लाइंस द लेटर पार्ट ऑफ 18 clause 2 does not provide for setting aside of the degree merely on the ground of the lack of territorial jurisdiction, merely on the ground of lack of territorial jurisdiction and lack of uncertainty. The decree will be rather set aside only if there was a consequent failure of justice. Consequent मतलब
लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन की वजह से, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस मतलब लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन की वजह से, ओनली इफ देयर वाज अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ओके, ठीक है। अब बाकी का रेस्ट ऑफ वी वुड डिस्कस इन 21 द पॉलिसी। So by that we have over with section 18. Now come to section 19. It does not take more time. It is simple. Read section 19. Where a suit is for compensation for wrong done to the person or to a movable property. Where a suit is for compensation for wrong done to the person or to a movable property. If the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court, if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court, and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of the another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. तो यहाँ पे भी वही सिंपल रूल है, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम एंड कॉज ऑफ एक्शन। तो जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहाँ पे भी सूट कर सकते हो, प्लस जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, वर्क करता है या बिजनेस करता है, देयर ऑल्सो यू कैन फाइल द सूट। सो इफ यू रीड इट अगेन, वेयर अ सूट इज फॉर द कंपनसेशन फॉर wrong done to the person means what? Compensation for the wrong to the person means what? They are talking about the tort. So the tort affecting the person or what? To movable property, or tort committed upon movable property. अब यहाँ पर immovable क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि immovable का tort सेक्शन 16 क्लाउज ई में, सेक्शन 16 क्लाउज ई में ऑलरेडी कवर्ड है। सो व्हाट दे आर लेफ्ट विद इज, क्योंकि tort to immovable property is already covered in section 16 clause E. So what they are left with is tort against the person and tort against the movable property, that is left here. क्योंकि compensation for the damages to immovable property is already in this section 16 clause E में. So read it once again. Where a suit is for compensation for wrong done to the person or to the immovable property, if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court. So since they are talking about the cause of action, where the wrong was done, so where is the cause of action lie? Of one court and the defendant resides. अब यहाँ पर ये नहीं लिख रहा है actually and voluntarily resides, unlike 20, but that is implicit. यहाँ पर you will file the suit where he actually and voluntarily resides, though they are not writing that the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court. The suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. Now, what section 19 tells you is, if the tort against the movable property or if the tort against the person, if that is committed wherever the cause of action arose, wherever the defendant resides, or wherever the defendant works, or wherever he carries on business, आप इनमें से किसी भी जगह पर सूट कर सकते हो, आप इनमें से किसी भी जगह पर सूट कर सकते हो. You can file the suit in at any of these places. Is that fine? अब illustration देख लो इसका. A residing in Delhi beats B in Calcutta. A दिल्ली में रहता है और उसने B को कैलकाटा में जाके मारा. मारा मतलब that is an assault. That is a tort of an assault. असॉल्ट कहाँ किया? कैलकाटा. अब कैलकाटा में अगर असॉल्ट किया तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज इन कैलकाटा, बट वेयर द डिफेंडेंट डिसाइड्स दिल्ली. If the suit can be filed at Calcutta as well as in Delhi. So B may sue A either in Calcutta or in Delhi. Now next illustration. A residing in Delhi publishes in Calcutta statements defamatory of B.
और डिफेमेटरी कम्युनिकेशन पब्लिश कहाँ हुआ? कैलकाटा। डिफेमेटरी पब्लिकेशन पब्लिश हुआ कैलकाटा में। सो वेयर इज द टॉट ऑफ डिफेमेशन कमिटेड? जहाँ पर पब्लिकेशन होगा वहाँ पर। सो दैट इज इन कैलकाटा एंड ही रेसाइड्स इन दिल्ली, सो सूट कैन बी फाइल्ड इन कैलकाटा एज वेल एज इन दिल्ली। मान लो उसने पब्लिकेशन, एक डिफेमेटरी पब्लिकेशन ऐसे न्यूज़पेपर में करवा दिया था जो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सर्कुलेट हो सकता है। जैसे सपोज एमपी के ऊपर का जितना भी इंडिया है, मध्य प्रदेश के ऊपर जितना भी इंडिया है, हर जगह इट सर्कुलेट्स। सो वेयर विल बी द सूट विल फाइल? वेयर विल द सूट विल फाइल? इट विल फाइल एनीवेयर। वेयर दिस मैन रेसाइड्स दैट प्लेस प्लस एनीवेयर। चूंकि पूरे नॉर्दर्न इंडिया पार्ट ऑफ में सर्कुलेट हुआ है, so that publication is everywhere, so the suit can be filed any of these places in northern part of India, including the place where the defendant resides. Is it fine? So tort of defamation के लिए जहाँ जहाँ publication होगा वहाँ वहाँ jurisdiction बन जाएगा, because cause of action arises at all those places. ये तो समझ में आया होगा आपको कि tort of defamation में cause of action arises, the cause of action arises at every place wherever the defamatory publication has been made. ठीक, तो that's all. तो आपका 16 to 20 is over. सेक्शन 16 to 20 ओवर हो गया, इतना पार्ट आपका ओवर हो गया। बट इसमें एक पॉइंट रह गया था 20 में, दैट इज ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ actually and voluntarily resides. Actually and voluntarily resides. And actually and voluntary resides carries on business, personally work for gain. तो इसको अभी हम देख लेते हैं in detail. Write upon it also. And this will, the definition we are writing here, that will work everywhere in these sections wherever these keywords were used. You write upon actually and voluntarily resides. It is essential that the defendant should be actually and physically residing at the said place. Full stop. If he is a mere visitor to the place, if he is a mere visitor to the place, he cannot be said to be residing there. जब जैसे कहीं घूमने गए हो, 2 महीने के लिए कहीं घूमने गए हो, then you cannot say to be residing there, you are just a visitor. तो आगे लिखिए, it is essential that the defendant actually resides, and he has the animus. Defendant actually resides and he has the animus, that is the intention to reside at that place, and he has the animus, that is the intention to reside at that place. तो इसमें एग्जाम्पल लिख लो आप एक, जैसे मान लो ए पर्सन इज हैविंग रेजिडेंस हाउस इन दिल्ली एंड ही इज ऑल्सो हैविंग अ हाउस इन दरभंगा। वो दरभंगा वाले मकान में वो व्यक्ति शायद एक आध बार जाता होगा साल में, या फिर 2 साल में एक आध बार इन दैट हाउस। नाउ दैट इज ऑल्सो द हाउस बिलोंग टू दैट पर्सन एंड दिस दिल्ली वाला हाउस इज ऑल्सो बिलोंग टू हिम। अब विच इज द प्लेस ऑफ रेजिडेंस? That house is also in his ownership and Delhi wala house is also in his ownership. But where actually he stays? He stays in Delhi. Most of the time in year he is in Delhi. At the times he goes to the place to visit, but most of the time he is staying at Delhi. So Delhi will be having the jurisdiction. तो कहने का मतलब ये है कि आपका मकान कहाँ पर है, that is not the criteria. आप किस जगह पर रहते हो, that is the criteria. आपका हो सकता है 10 मकान अलग अलग शहरों में है, लेकिन आप रहते हो उनमें से किसी एक शहर में, तो उस शहर के कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होगा। दूसरे शहरों के मकानों का जो कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है उसमें उनका नहीं होगा, अनलेस आप वहाँ जाकर रहने लग जाओ। एंड देयरफॉर द एनिमस, द इंटेंशन, द कंडक्ट always will be examined, and that person intention to continue to always stay at
is at Delhi, and therefore the Delhi court will have the jurisdiction. So the Delhi court will have the jurisdiction when we talk about the actually and voluntarily resides. अब इसमें एक और सेंटेंस लिखो आगे, राइट, it is also essential that the defendant shall be voluntarily residing at the place. voluntarily का तो मतलब आपको पता होगा, his own willingness, अपनी मर्जी से, voluntarily residing at the place. Thus, if the defendant resides there out of some compulsion, जैसे जेल में बंद है, तो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि जेल में मैं रहता हूँ, यही तो बोलेगा जेल में बंद हूँ। कोई ऐसे थोड़ी बोलता है कि मैं जेल में निवास करता हूँ, आई रिसाइड इन जेल। वो बोलेगा कि मेरे को जेल में बंद कर रखा। सपोज if a person is in jail, then that is out of compulsion, that will not be the place of his residence. तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप, that if the defendant is in the jail, या फिर किसी मकान में कैद करके रख रखा है, उसको जबरदस्ती बंद करके रख रखा है, so that is out of compulsion, so that is not a place of residence। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लिखो उस पर, कैरीज ऑन बिजनेस, राइट। बिजनेस हेयर मीन्स a commercial transaction. Business here means a commercial transaction wherein the transaction is done by the person with profit motive. With profit motive. The transaction is done by the person with profit motive. ठीक. It is not essential. It is not essential that the defendant should himself doing business. Rather, he may do it through an agent as well. Rather, he may do it through an agent as well. He may do it through an agent as well. However, if he does the business through a freelancer, then that freelancer not being his exclusive agent, then the defendant cannot be said to be doing business at such place. The defendant cannot be said to be doing business at such place. What I mean by that is I explain to you कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है कि देयर शुड बी सम कमर्शियल ट्रांजैक्शन, एंड दैट कमर्शियल ट्रांजैक्शन मे बी डन बाय द डिफेंडेंट हिमसेल्फ और मे बी डन बाय हिज एजेंट। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरा कोई एजेंट कहीं और है किसी प्लेस पर, ही इज डूइंग सम कमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड दैट प्रॉफिट इज अर्नड बाय मी। द मोटिव इज to earn some profit and also providing services. Suppose I am providing services and you are paying me in the office, and that is where it becomes a commercial transaction. This will be considered to be a business. This act will be considered to be a business. तो अगर आपका प्रॉफिट कमाने का मोटिव है, यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर चैरिटी, आप चैरिटी के लिए नहीं कर रहे, आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, अर्निंग के लिए कर रहे हो, और कमर्शियल ट्रांजैक्शन और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस पर्पस। प्लस अब मान लो मैंने एक ब्रांच खोल लिया अहमदाबाद में, अब अहमदाबाद में जो मैंने ब्रांच खोला उसमें मैंने किसी और को इंचार्ज बना रखा है, अब ही इज द एजेंट ऑफ माइन, सो आई स्टिल बी सेड टू बी डू बिजनेस एट अहमदाबाद इवन इफ आई एम नॉट पर्सनली इन्वॉल्व देयर बट माई एजेंट इज परफॉर्मिंग। लेकिन मान लो मुझे अपने बिजनेस को इसको एडवर्टाइज करना है, मान लो इसका एग्जांपल ले लो, मैं कोचिंग दे रहा हूँ आपको, इसको मुझे एडवर्टाइज करना है। मान लो मुंबई आई एम गोइंग टू एडवर्टाइज माय कोचिंग, मुंबई में मेरे को एडवर्टाइज करना है कोचिंग में, सो आई एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ फ्रीलांसर मतलब देयर इज सम कंपनी और एजेंसी देयर which done the advertisement for different companies। तो मैंने उनको एंगेज कर लिया, अब वो दूसरे कंपनीज का भी कर रहे हैं और मेरा भी कर रहे हैं, तो दे आर नॉट माई डायरेक्ट एजेंट, दे आर नॉट माई स्पेसिफिक एजेंट बिकॉज आई हैव नॉट क्रिएटेड देम ओनली फॉर माई एडवर्टीजमेंट, दे आर डूइंग एडवर्टीजमेंट फॉर अदर्स एंड आई ऑल्सो गेट इन्वॉल्व, so that is a freelancer, so I cannot be said to do business at Mumbai because that is not a specific agent of mine,
लेकिन इफ़ आई अपॉइंट अपना कोई एजेंट एट मुंबई कि तुम जाओ वहाँ पर जाकर एडवर्टीजमेंट करना, देन आई विल बी सेट टू गेट इनटू बिजनेस देयर. बट इफ आई टेक द फ्रीलांसर who do the work for the others also, that cannot be said to be a doing business of mine. Oh, fine. अब नेक्स्ट आप लिखिए पर्सनली वर्क्स फॉर गेन. राइट, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन. It is essential that it is essential that the defendant should be working himself. Working himself means personally working, should be working himself. Working himself with the purpose of what? With the purpose of earning remuneration for himself. Remuneration means salary. Purpose of earning remuneration for himself. Full stop. Next sentence. If he works only for the purpose of charity and not for any salary or remuneration, it will not be considered to be personally working for gain. If there has to be some mental or physical labor done by him, and there has to be some salary associated with that work. The salary जरूरी है. Remuneration in some form is essential. Now I tell you, जो गांव में मंदिर है, उसमें कोई पुजारी अपॉइंटेड है, अगर वो सैलरी लेता है किसी से एवरी मंथ. अब काफ़ी मंदिरों में जो नॉर्मल पुजारी रहते हैं उनका एग्रीमेंट ये होता है कि जो भी चढ़ावा आएगा उनको मिल जाएगा, एंड दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ. लेकिन वो तब होता है जब मंदिर में चढ़ावा बहुत ज़्यादा है. लेकिन शुरुआती दौर में कोई पंडित को चढ़ावा ज़्यादा मिलता नहीं, प्लस गांव के लोगों को कुछ सोर्स, इतना मीन्स ऑफ सोर्स नहीं होता, तो काफ़ी कम दक्षिणा या भेंट चढ़ाते हैं. तो मान लो कोई पंडित जी हैं, वो सैलरी भी लेते हैं 5-6,000 जितना भी, और चढ़ावा आता गाँव में वो भी लेते हैं, और खाना पीना गाँव वाले मान लो खिलाते हैं उसको, और रहने का भी खर्चा नहीं, रहते वहीं हैं. अब इस तरीके से जो सैलरी ले रहे हैं पंडित जी, ही इज एक्चुअली वर्किंग फॉर गेन बिकॉज ही इज टेकिंग द सैलरी. बट सपोज द अरेंजमेंट वाज दैट ही इज नॉट गेटिंग एनी सैलरी, whatever there is chadava in the mandir that he will take, so that chadava is not fixed, and that cannot be said to be given by the owner of that place also. So anyone cannot say that the owner is giving salary or remuneration to him. In fact, he was rewarded by the people who is coming to the temple. तो वो जो चढ़ावा वो ले रहे हैं, that is not the place where he is personally working for gain. That is not the place where he is set personally working for gain. Gain was remuneration और salary. तो वो सिर्फ चढ़ावे के लिए जो पूजा कर रहे हैं वहाँ पर, और एक्चुअली तो वो फिर चढ़ावे के लिए हो भी नहीं रहा, वो तो अपनी सेवा भाव के और उसकी वजह से कर रहे हैं. चढ़ावा तो आ रहा है, वो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड. तो जो पूजा पाठ वो कर रहे हैं और चढ़ावा आ रहा है, दैट इज नॉट अ केस ऑफ पर्सनली वर्किंग फॉर गेन because there is no salary or remuneration involved there. But if you are giving some money to him, then it becomes a personally working for gain. तो इसको लिख लो आप, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ. if the pujari does the puja in the temple not for the purpose of earning some salary, rather only for the purpose of taking offerings at the temple, he will not be said to be personally work for gain. He will not be said to be personally working for gain. So is it fine? अब देखो, पहले के समय इन अर्लियर डेज जो खेतों में मजदूर वगैरह काम किया करते थे, एट दैट टाइम, अर्लियर डेज, वेरी ओल्ड डेज, तो एट दैट टाइम द बार्टर सिस्टम वाज देयर, कि उसमें सैलरी और पैसे वगैरह नहीं मिलते थे उनको, मजदूर थे,
बट कोई काम कर रहा है खेती में या मजदूरी में, तो उसको कुछ किलो अनाज या राइस वो दे दिया करते थे. So it was a more of barter kind of thing, that you are doing something for me and I will give you this much of rice or wheat, but that have got a money worth. So that will also be said to be personally working for gain. Now, I am not saying that it is only for salary. I am not saying that it is only for salary. But इस एग्जाम्पल में पुजारी को जो ऑनर नहीं दे रहा है, ऑफरिंग, ऑनर इज नॉट गिविंग ऑफरिंग, कभी कभार देता है, दैट इज अलग थिंग. पीपल आर गिविंग ऑफरिंग्स, people are doing the offerings, people are giving, and the he is taking away, Pandit ji is taking away, and therefore he is not working for the owner as salary or any kind of remuneration or any kind of remuneration, any kind also, then he is not personally working for gain. लेकिन मान लो पुजारी जी को अगर रुपए के बदले कुछ और पैसे के बदले रेम्यूनरेशन देते हैं, then that is always a remuneration in kind, and that will still be a case of personally working for gain. Now that's it for this. Next we have to move upon the pecuniary and subject matter jurisdiction. Pecuniary and subject matter jurisdiction. फिर उसके बाद सेक्शन 21 देखेंगे, 21, 21A, then 22 till 25, where I will talk about transfer of cases. Then उसके बाद we will get into the res judicata kind of topic. But before getting into the pecuniary jurisdiction, let's talk about this topic, because that will fit into this topic, territorial jurisdiction. ये केस territorial jurisdiction के साथ फिक्स बैठेगा. So before getting into the pecuniary jurisdiction, let's talk about this topic. So we would discuss the Harshad Chimanlal Modi case, but that we continue in the next lecture. That's it for this lecture. Thank you.